we had been discussing the point defect, the two type of point defect we have discussed so far, that is the impurity defect and the stoichiometric defect. Now coming to the third type of defect called as non-stoichiometric defect. So this is the third type of point defect, non-stoichiometric defect. Now what do you mean by non-stoichiometric defect? Here the constant particles are present. The constant particles are present in a non-stoichiometric ratio. The non-stoichiometric ratio में present है constant particle, that is जो molecular formula कह रहा है और internally जो हम find out करते हैं cation और anion का ratio वो equal नहीं आ रहा. So that is the meaning of the term non-stoichiometric. So here the constant particles are present in non-stoichiometric ratio, and that is because of the defect. So after defect there is a non-stoichiometric. Non-stoichiometric defect may be because of two types: metal excess defect and metal deficiency defect. So first we will discuss metal excess defect. The first kind of non-stoichiometric defect is metal excess defect. Now metal excess defect can be because of anion vacancy or because of cation excess. So it can be because of anion vacancy or excess of cation. So first we will discuss metal excess defect due to anion vacancy. What do you mean by metal excess defect due to cation anion vacancy? Now metal excess is due to the presence of more cation or absence of anion. So first reason is absence of anion. Anion are missing. Now it is generally seen in alkyl halides. Alkyl halides like NaCl, KCl, lithium chloride, they show these kind of defect called as anion vacancy. So when you take alkali metal halide and you heat in sodium or alkali metal vapors, what happens is anion will leave its own side, but to maintain the neutrality, electron get trapped into this place of anion, and such type of defect is called metal excess defect due to anion vacancy. For example, anion vacancy हो रही है. You have NaCl solid and you are heating this in presence of sodium vapor. So what will happen? The white NaCl will turn to yellow NaCl, and this yellow NaCl will have a defect. तो येलो होने का रीजन क्या है? डिफेक्ट. नाउ ओरिजिनली व्हाट वाज द अरेंजमेंट? यू हैड कैटायन एनायन कैटायन एनायन. दिस इज द एक्चुअल अरेंजमेंट एंड सो ऑन. So small size plus minus plus minus minus plus minus plus plus minus plus minus etc. So what will happen? This is NaCl crystal where plus indicates Na plus and Cl minus minus. Now when you heat it in presence of sodium vapor, we all know in NaCl, Na forms Na plus by the laws of electron and Cl gains electron to form Cl minus. Now when you heat it in Cl like NaCl in presence of sodium, the sodium will release electron and those electron would be taken by Cl minus. ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन Cl minus क्या करेगा? अपनी जगह छोड़ देगा, और जो Cl minus था वो फॉर्म करेगा क्लोरीन बाय द लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दो क्लोरीन एटम एक क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? फ्री. ये इलेक्ट्रॉन एनायन की साइड ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे. एनायन इज एब्सेंट, एनायन वैकेंसी तो हो गई और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? ट्रैप. जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है एनायन की जगह, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर. ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल है, मूव कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा. जब वो डी एक्साइट होता है, इट विल एमिट एनर्जी एंड दैट विल लाई इन द विजिबल रेंज गिविंग अ येलो कलर टू द क्रिस्टल. So this is because of the F center. F in Greek means Fabenzenter, which also mean color imparting center. तो कलर देने का रीजन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एनायन की जगह ट्रैप हो जाता है. दिस इज कॉल्ड कलर imparting center or F center of Fabenzenter. So what are Fabenzenter or F center?
these are vacant sites created by anions, and in these vacant sites of anion, electron are getting trapped, and such a trap or the location in which electron is getting trapped in place of anion is called F center, far point center, or color imparting center. And hence NaCl, when you heat it in Na vapor, it turns yellow. Similarly, if you take KCl and heat it in K vapor, you get a lilac color, and if you take lithium chloride and heat it in lithium vapor, you get a pink color. So all are because of alkyl halide. When you heat them in alkali metal vapor, F center would be created, and hence you will have metal excess. anion कम हो गया है, electrically neutral है, but anion की जगह electron आया तो charge balance हो गया, but anion कम है as expected from the stoichiometric ratio. So it's a non-stoichiometric metal excess defect due to anion vacancy. So metal excess, the first reason is anion vacancy. Now the second type of metal excess defect may be because of cation excess. Excess of cation metal excess कर सकता है, anion या तो कम होगा या cation ज़्यादा होगा. Now metal excess due to cation excess, and where is this cation coming? This will come at the intersite. For example, when we talk about a solid zinc oxide, ठीक है, जिंक ऑक्साइड नॉर्मली जो सॉलिड है वाइट कलर का होता है, बट जब हम इसको हीट करते हैं इट विल टर्न टू येलो, और येलो होने का रीजन है इट रिलीजेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. फाइन, you had a zinc oxide solid, plus minus plus minus plus minus, ये एक प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, Zn2 प्लस को, और माइनस O2 माइनस को. So you have a crystal, each cation is surrounded by anion and each anion is surrounded by cation. Now what will happen? The cation are present, anion are spread. Now when you heat it, this extra zinc ion will occupy the intersites, and negatively charged O2 minus will release electron and form oxygen gas. तो O2 minus कहीं पर भी ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो गैस बन के रिलीज हो गए. दिस इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, और ये जिंक आयन ट्रैप हो जाते हैं इंटरसाइट पे. सो Zn इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट एंड इट गेट्स ट्रैप्ड एट इंटरसाइट. हर जगह Zn2 प्लस है, O2 माइनस, Zn2 प्लस, O2 माइनस, बट जब हमने इसको हीट किया तो कुछ Zn2 प्लस ट्रैप हो गए इंटरसाइट्स पे, बट ऑक्साइड ट्रैप नहीं होते. ऑक्साइड विल टर्न इनटू ऑक्सीजन एंड लूज टू इलेक्ट्रॉन. अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है. इसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन इंटरसाइट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं. अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द इंटरसाइट्स एंड कैटायन इज प्रेजेंट, हेंस इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. बट कैटायन नंबर ज़्यादा है एनायन के कंपैरिजन में, सो दिस इज मेटल एक्सेस ड्यू टू कैटायन एक्सेस, एंड हेंस जिंक ऑक्साइड व्हिच वाज व्हाइट will now turn into yellow because of the presence of free electrons. These electrons will absorb light, and when they emit light, that lies in the visible range, and hence they appear yellow in color. So I hope this equation is clear. It is white at room temperature, but when you heat it, it turns yellow because of the formation of free electrons which get trapped at the intersites along with extra Zn2 plus. So this is metal excess due to cation excess. The electrons are getting trapped and electrical neutrality is maintained. Now the second type of non-stoichiometric defect. The non-stoichiometric defect can be because of metal deficiency. Non-stoichiometric can be because of metal deficiency. Metal deficiency defect may metal absent. So metal deficiency is due to cation vacancy, and it is generally seen in solid in which the metal have ability to show variable oxidation state. यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो जनरली ये डिफेक्ट शो करते हैं. फॉर एग्जांपल FeO, NiO एक्सेट्रा. Now what happens here is, नाम से दिख रहा है मेटल डेफिशिएंसी और वो भी कैटायन वैकेंसी, तो कैटायन गायब होने जा रहा है अपनी जगह से. You had a solid FeO where Fe is as 2 plus, then you have O2 minus,
Fe2 plus, O2 minus, O2 minus, Fe2 plus, O2 minus, Fe2 plus, Fe2 plus, O2 minus, Fe2 plus, O2 minus, so on. तो ये था. अब क्या होता है इस डिफेक्ट में कुछ Fe has the ability to show ferrous, Fe2 plus and Fe3 plus. तो कुछ Fe2 plus एब्सेंट हो जाते हैं. एक Fe2 plus गया है और Fe3 plus उसकी जगह पे आ गया. तो एक Fe2 plus जब गायब हुआ, एक Fe3 plus आ गया, तो अब यहाँ पे कैसा होगा, चार्ज बैलेंस करना होगा. चार्ज बैलेंस करने के लिए you will have 2 Fe turning to Fe3 plus. 2 Fe Fe3 plus में बदल गए और एक Fe गायब है. So here what happens? Cationic space is vacant. कैटायन गायब हुआ तो चार्ज बैलेंस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, the other metal ion moves to higher oxidation state. So it is seen in transition metal which have ability to show variable oxidation state, and now the cation is getting deficient, so it's metal deficiency defect due to cation vacancy, and cation is getting absent. So here some Fe2 plus are missing, and Fe2 plus when they miss, the other Fe2 will turn to Fe3. As a result, this FeO is not only made of Fe2 plus but also Fe3 plus. So it's a non-stoichiometric defect, and it may have the correct formula Fe 0.93 to 0.960. This is the correct formula क्योंकि कुछ Fe गायब है और कुछ Fe3 plus state में जा चुके हैं. So this is metal deficiency due to cation excess. So these are the different type of defects in solid. 3 basic type: impurity, stoichiometric and non-stoichiometric, and these are the overall classifications.